Which wonder of the world has emerged as the most popular destination for Indian travelers? So you know that there are seven wonders of the world. So which wonder of the world is most popular among Indians for tourism? And the correct answer is Great Wall of China. The new Seven Wonders of the World was a campaign that was started in year 2000 to choose wonders of the world from selection of 200 existing monuments. And the winners were announced on 7th of July 2007 in Lisbon. So here are the seven new wonders of the world. So the first is Great Wall of China, which is the most popular among Indians. Second is Christ the Redeemer statue, which is in Rio de Janeiro, Brazil. Machu Picchu, which is in Peru. Chichen Itza, which is in Mexico. Roman Colosseum, which is in Rome. And Taj Mahal, of course, in India. And Petra, which is in Jordan. So these are the new seven wonders of the world that were declared on 7th of July 2007 in Lisbon. Moving on to the next question. Who unveiled a stainless steel charkha at Sabarmati River front in Ahmedabad? Where is this stainless steel charkha inaugurated? So the right answer is BJP President Amit Shah. This charkha is around 21 feet in length, 11 feet in height and about 6.5 feet in its breadth. It is made up of chromium nickel stainless steel. The aim of unveiling this stainless steel charkha is to popularize khadi among the youth of this country. KVIC, which is Khadi and Village Industry Chairman Vinay Kumar Saxena, said that it is tribute to Mahatma Gandhi ahead of its 150th birth anniversary, which will be on 2nd of October 2019. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which project is launched by Goa State Government Ministry for Agriculture for farmers to get good yield of crops? और इसका सही आंसर है शिव योग कॉस्मिक फार्मिंग. गोवा के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री विजय सरदेसाई ने शिव योग कॉस्मिक फार्मिंग नामक स्कीम की शुरुआत की है, जो कि एक वैदिक टेक्निक है. एंड दिस स्कीम रिक्वायर्स फार्मर टू सिट, मेडिटेट एंड चैनल कॉस्मिक एनर्जी बाय चैंटिंग ओम रोम जम सह फॉर 20 मिनट्स अ डे फॉर बेटर यील्ड्स. और इस टेक्निक की, इस स्कीम की शुरुआत की थी डॉक्टर अवधूत शिवानंद ने थ्रू हिज शिव योग फाउंडेशन. श्री विजय सरदेसाई, जो कि शिव योग फाउंडेशन के फॉलोअर हैं, उन्होंने गोवा में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए शिव योग कॉस्मिक फार्मिंग की शुरुआत की है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको? एंड द करेक्ट आंसर इज एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर. ही इज ऑफन रिफर्ड एज AMLO by the media. And he is the first left-wing candidate of the National Regeneration Movement who has been elected in over 20 years. The National Electoral Institute, INE, which is responsible for the voters count in Mexico, attributed him at least 53% of votes. And he will assume the office on 1st of December 2018. So here comes our next question. Which country has become first in the world to tow Antarctic icebergs for water needs by early 2020? And the correct answer is UAE, United Arab Emirates. A local company in UAE, it has launched iceberg project to highlight the upcoming stages and benefits in the environment and economy. The pilot phase of the project, it would come during the second half of 2019, that is next year, towards the coast of Perth in Australia, or it may be the coast of Cape Town in South Africa, as both these areas are the coastal regions in the respective countries. The estimated cost of the project is around $50 to $60 million, and this firm is also working on to develop a technology that will reduce the project cost. It will ensure zero ice melting in the transportation process of the iceberg towards the coast of the respective country, and would provide fresh water to the customers at the minimal cost. So looking after the consequences of the global warming, there are several glaciers in the Antarctica which have been broken, and their parts, the icebergs, are floating around randomly. So it is a good initiative to use those broken icebergs or the part of the glaciers, because they are the source of fresh drinking water. And recently there was a news in the Cape Town that the people are already facing scarcity of the drinking water in Cape Town area. So this project is a good initiative that would fulfill the growing needs of the drinking water supply by utilizing the fresh water from the icebergs, which are the broken parts of the glaciers. Moving on to the next question. Which site near the Spanish city of Cordoba was added to UNESCO's list of World Heritage Site recently? You know that UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
and it is one of the specialized agency of United Nations which enlist the places of historic importance or cultural heritage in the world into the World Heritage List. So recently, Caliphate city of Medina Azahara, which is site near the Spanish city of Cordoba, it has been listed as a World Heritage Site. It is medieval Arab Muslim town, a 10th century Moorish site that provides in-depth knowledge of now vanished Western Islamic civilization of Al-Andalus. The town was de facto capital of Al-Andalus. So this town, Medina Azahara, which was capital of the civilization of Al-Andalus, it has been recently given the status of World Heritage Site by UNESCO. Next question. Which state assembly adopted a resolution demanding suspension of Dam Safety Bill of 2018 by the centre? And the answer is Tamil Nadu. Tamil Nadu recently demanded suspension of Dam Safety Bill of 2018. The proposal of this bill, Dam Safety Bill, is to provide safety measures like surveillance, inspection, operation and maintenance. It also proposed to establish national level and state level committees on the dam safety that would formulate the policies. Now, why Tamil Nadu has opposed this dam safety bill? Because it possesses control of Mullaperiyar Dam, which is constructed over Periyar River in Kerala. And if this dam safety bill come into force, Tamil Nadu would lose control over many of its agendas regarding Mullaperiyar Dam, because it would violate the rights of Tamil Nadu with regard to control of this dam in Kerala. You know that already there is a tussle going on between the state of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry regarding the distribution of water of Kaveri River. So this dam safety bill that would violate the rights of Tamil Nadu with regard to the control of the affairs of Mullaperiyar Dam, which is in Kerala, it is going to trigger the controversy again. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which political party has launched full statehood campaign? And the correct answer is Aam Aadmi Party or AAP for Delhi. Aam Aadmi Party has launched full statehood for Delhi movement and also inaugurated Andolan Kendra in Model Town. Other than Andolan Kendra, they have also launched signature campaign to demand separate statehood for Delhi. चलिए सबसे पहले दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं. You know that there are 29 states and 7 union territories in India. And government functions at two levels, that is central government level and state government level. So what are basically union territories and how are they different from the state government? That is the main point we have to understand here. Union territory basically एक ऐसा area है which is less in population and smaller in area as compared to the state government. So that is why union territories are directly governed by the center. Central government या president directly union territory को control करती है थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव, और उस रिप्रेजेंटेटिव को या तो एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है. यदि दिल्ली की बात करें तो उस रिप्रेजेंटेटिव को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है. बट इसके अलावा दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 239AA. सो दिस स्पेशल प्रोविजन वाज एडेड बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991. 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था जिसमें आर्टिकल 239AA को ऐड किया गया था, विच हैज गिवन स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. अब ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्या है? हम दिल्ली को चार पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है ओल्ड दिल्ली, विच इज द ओल्ड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल रूलर शाहजहां. Second है New Delhi, the part of Delhi which was constructed around this old city of Shahjahanabad, which is New Delhi, and right now New Delhi is capital of India. Third part है NCT, National Capital Territory of Delhi, जिसे 69th Amendment Act of 1991 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है 1991 में. एंड फोर्थ पार्ट कहलाता है NCR, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली. इसका मतलब है दिल्ली के आसपास के जितने एरियाज हैं, टेरिटरीज हैं, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद एक्सेट्रा, इन सभी को दिल्ली के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन बनाया है. सो दैट इज कॉल्ड एज NCR, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली. अब हमारा फोकस है NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. As per NCT, Delhi, in spite of being a union territory, would also have its own legislative assembly.
दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पर इसके साथ ही दिल्ली का खुद का विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, and total number of seats in Vidhan Sabha of Delhi is 70. So whichever political party would have the majority of the seats in Legislative Assembly of Delhi would form the government of Delhi. So right now Aam Aadmi Party, they have 66 out of 70 seats और बाकी के 4 seats बीजेपी के हैं. So we have the government of Aam Aadmi Party AAP in Delhi with 66 seats in Legislative Assembly. So Aam Aadmi Party चाहता है कि दिल्ली अब एक यूनियन टेरिटरी ना रहे, बट दे हैव टू बी गिवन अ स्टेटस ऑफ अ स्टेट, फुल स्टेटहुड ग्रांट किया जाना चाहिए दिल्ली को. और जाहिर सी बात है, दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1952. So it's been a long time, and National Capital Territory of Delhi, in spite of being a union territory and in spite of having its own Vidhan Sabha, they deserve statehood. As Delhi is a union territory, so most of the subjects and many important subjects like police, law and order and land, they are not controlled by the state or union territory, that is the Vidhan Sabha, but they are controlled by the center through Home Ministry. अब समझिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इन सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर, जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया या लैंड हो गया, पर दिल्ली की विधानसभा का कोई कंट्रोल नहीं है इन मैटर्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है. एनसीटी ऑफ दिल्ली दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 239AA, दे हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 70 मेंबर्स, but even after that they do not control important matters like police, law and order and land, but these matters are controlled by Home Ministry of the center. This complete arrangement, it requires that there has to be a perfect connection, a perfect blend or a collaboration between the Lieutenant Governor, who is a representative of the center, and Chief Minister of Delhi. जब तक चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में साझेदारी अच्छी है, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है. But once there is a clash on several matters, on several policies and agendas, it is definitely going to be a problem for Delhi. Moving on to the next question. Recently, government has increased MSP, which is minimum support price, up to rupees 200 for which crops? किस क्रॉप के लिए केंद्र सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 200 रुपए तक बढ़ाया है? एंड द करेक्ट आंसर इज पैडी क्रॉप्स, मतलब राइस के लिए. सबसे पहले समझते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है. ये एक मिनिमम रेट है, मिनिमम प्राइस है जिस प्राइस पर गवर्नमेंट वुड बाय अ क्रॉप फ्रॉम द फार्मर. बिकॉज कई बार क्रॉप्स का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिसमें जो क्रॉप है उसका रेट काफी नीचे चला जाता है, एंड द फार्मर हैज टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. सो टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम सच मिसहैप, गवर्नमेंट ने हर एक क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है कि इतना तो मिनिमम रेट रहेगा ही, चाहे ओवर प्रोडक्शन हो या अंडर प्रोडक्शन हो. दैट वुड बी द मिनिमम अमाउंट और द मिनिमम रेट एट विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय क्रॉप फ्रॉम द फार्मर. सो दिस प्रपोजल इज गोइंग टू कवर खरीफ क्रॉप्स, which is paddy, rice, cotton, soybean and some pulses. और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से फूड सब्सिडी इज गोइंग टू राइज बाय ₹2 लाख करोड़. फूड सब्सिडी आप समझते हैं, डिस्काउंट जो हमें गवर्नमेंट देती है ऑन क्रॉप्स. गवर्नमेंट को काफी ज्यादा इसमें एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है. हाइक इन एमएसपी बाय अ रिकॉर्ड ऑफ ₹200 पर क्विंटल एंड अप टू 52% इन सम अदर सोन क्रॉप्स एज वेल. तो ये एक तरह से एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है एनडीए गवर्नमेंट ने. आप जानते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनका एजेंडा है कि फार्मर की जो इनकम है, किसान की जो इनकम है, इसे डबल करना है अप टू 2022. सो 2022 इज अ टारगेट ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द स्कीम्स अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर. इस पर्टिकुलर स्टेप से गवर्नमेंट का एजेंडा था कि they want to provide farmers with 1.5 times of the cost of producing a crop. So इसी इंटेंशन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट has now increased MSP for rice by ₹200 per quintal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Former Prime Minister of which country has been arrested over the charges of corruption? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को करप्शन के चार्जेस के लिए अरेस्ट किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया के प्रधानमंत्री मिस्टर नाजिक रजाक. He was charged with corruption involving Malaysian State Fund, which is 1 MDB, Malaysia Development Berhad. ये एक तरह का सोवरेन वेल्थ फंड है, which was owned by Finance Ministry headed by Mr. नाजिब रजाक. So जब ये प्रधानमंत्री थे
फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी। उस समय मलेशिया का जो डेवलपमेंट फंड है MDB, उसमें से पैसे का पर्सनल यूज किया गया है, मिसयूज किया गया है, ऐसा इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन अमेरिकन जज was shortlisted to be the next US Supreme Court Justice? एंड इसका करेक्ट आंसर है मिस्टर अमूल थापर। 25 दूसरे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से अमूल थापर भी एक कैंडिडेट थे, who would have replaced US Judge Anthony Kennedy. However, later on, he failed to make it to the shortlist of 3 candidates from which the President Trump would pick the replacement. ये टॉप 25 में तो आए, लेकिन टॉप 3 में ये अपनी जगह नहीं बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which agency of US government have been facing fierce protest for immigration policies of the migrants? US की कौन सी फेडरल एजेंसी है जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट फेस कर रही है, लोग इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ माइग्रेशन? और इसका करेक्ट आंसर है ICE, विच स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। ये एक फेडरल एजेंसी है, सेंट्रल कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉज governing the border control, customs, trade and immigration. And this ICE, Immigration and Custom Enforcement, it was established in year 2003 under Department of Homeland Security, which was created in the wake of 9/11 attack. आप जानते हैं 9/11 attacks के बारे में। So उस समय प्रिकॉशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी स्टेब्लिश किया गया था और उसी के तहत ICE को स्टेब्लिश किया गया था। It also manages the detention and removal of people which are arrested for immigration violation. And protests are driven by a separation of hundreds of children from their families due to harsh immigration policies. तो आप जैसा कि जानते हैं, अभी अमेरिका के जो करेंट प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्श पॉलिसीज एग्जीक्यूट की हैं रिगार्डिंग इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो अमेरिका में रह रहे थे उनको बाहर भेजा गया है देश के, और उसी के चलते कुछ फैमिलीज अलग हो गए थे, जिसमें से जो माइनर हैं, दोज वर लेस देन 18 years of age, या जिसे चिल्ड्रन बोल सकते हैं, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द अडल्ट्स। उसी को लेकर एक फियर्स प्रोटेस्ट चल रहा है ICE में, और इस प्रोटेस्ट के चलते डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी प्रेशर आ गया है, ही वुड ईज सच इमिग्रेशन पॉलिसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मोबाइल ऐप has been launched by Election Commission of India for conduct of free elections? आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, और इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। सो कौन सा मोबाइल ऐप रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया गया है ताकि फेयर इलेक्शंस हो सके पूरे देश भर में? एंड द करेक्ट आंसर इज सी विजिल नाम का मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च किया है। It is an app for the citizens to report any violation of Model Code of Conduct, which is MCC, during election. C-Vigil is going to be used in forthcoming assembly polls in Chhattisgarh, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड राजस्थान। तो इसको इनिशियली सबसे पहले टेस्ट किया जाने वाला है, जो अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में और राजस्थान में, वहां C-Vigil नाम के इस ऐप को यूज किया जाने वाला है। इसको लॉन्च किया है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर OP रावत जी ने। किस तरह से इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करना है? एनी फोटो और अ वीडियो ऑफ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इट हैज टू बी अपलोडेड ऑन दिस ऐप एंड ऑटोमेटेड लोकेशन मैपिंग वुड बी डन बाय द ऐप। यदि किसी भी लोकेशन पर किसी भी इलेक्शन पोलिंग के दौरान यदि किसी सिटीजन को ऐसा लगता है कि यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ छिड़कानी हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, इलेक्शन मैनिपुलेशन हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, तो उस जगह का, उस इंसिडेंट का एक फोटो या एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड करना पड़ेगा। अपने आप वो लोकेशन को मैप कर लेगा एंड द इमीडिएट स्टेप्स वुड बी टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट सेंटर्स उमंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड? उमंग मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सो ये सेंटर का ऐप है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है। किस स्टेट गवर्नमेंट का इसको लॉन्च किया गया है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। दिस ऐप वुड अलाउ पब्लिक टू अवेल मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज। इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और ये एक इनिशिएटिव है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का। इट वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय और लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर K. Palaniswamy।
It would provide access to over 1,200 services of the government organization at both the levels, in the center or in the state. Basically, central government का मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसे तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एनजीटी चेयरपर्सन? एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। किसे एनजीटी का चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस ए के गोयल, हु इज सुप्रीम कोर्ट जज। He has been appointed for 5 years as per the order issued by the Personnel Ministry. चेयरमैन की पोजीशन जो थी वो पिछले 8 महीनों से वेकेंट थी आफ्टर जस्टिस स्वतंत्र कुमार रिटायर्ड ऑन 19th of December 2017. After 8 months, Justice Adarsh Kumar Goyal has resumed the office as a chairperson of NGT. NGT के बारे में बात करें, it was established in year 2010 under National Green Tribunal Act of 2010 for effective and expeditious disposal of cases which are related to environmental protection. National Green Tribunal अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आइडियोलॉजी बेस्ड है दैट यू हैव अ राइट टू लिव इन द एनवायरनमेंट विच इज फ्री ऑफ पोल्यूशन। जैसे कुछ केसेस जो पेंडिंग है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने about air pollution, Ganga and Yamuna rejuvenation, Vaishno Devi, Volkswagen emission fiasco, and these are some of the matters which are pending before the tribunal. Next question देखते हैं। Celebration of which festival started in Spain to mark the beginning of week-long bull festival? And correct answer है इसका San Fermin festival. San Fermin festival से शुरुआत हुई है स्पेन में बुल फेस्टिवल की। Bull festival, it has been protested in Spain due to sexual violence and animal rights violation. Which two superpowers in the world have recently launched biggest trade war in the economic history by imposing tariffs on each other? And the right answer is United States of America and China. Recently, America ने 25% duties या taxes impose किए हैं on approximately $34 billion imports from China. And overall, imposition of this duty, imposition of this tax, it could affect about $550 billion of Chinese goods. फर्स्ट राउंड में अमेरिका ने टारगेट किए हैं इंडस्ट्रियल गुड्स को एंड नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स जो कि यूज किए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज। सो ऐसा अमेरिका ने क्यों किया है? बिकॉज पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चाइना के बीच में टसल चल रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर। आप जानते हैं कि अमेरिका ग्लोबल लीडर है in the matters of robotics, biotechnology and artificial intelligence. And over the years, China has given a competition to America and they have a plan in future as well to become the tech champions in this field. टसल के चलते अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया है by imposing taxes on China. अब इसका नतीजा क्या होगा? What would be the consequences by imposition of taxes? आप जानते हैं चाइना इज फेमस ग्लोबली फॉर जनरेटिंग चीप क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्या मैं बोल सकती हूं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एक कम रेट में अवेलेबल होते हैं, बट टैक्स बढ़ जाने की वजह से अब जब ये चाइनीज आइटम अमेरिकन मार्केट में एंटर करेगा इसकी कीमत बढ़ चुकी होगी क्योंकि टैक्सेस ज्यादा पे किए हैं। इंक्रीज प्राइस वाला चाइनीज आइटम अमेरिकन मार्केट में एंटर करेगा, इट वुड फेस कॉम्पिटिशन विद द अमेरिकन गुड्स एज वेल। इसी वजह से चाइना इज नाउ गोइंग टू फेस अ ट्रबल इन अमेरिकन मार्केट and also it is going to affect the economy of China. So as soon as America has imposed taxes on China, China also responded by imposing retaliatory taxes on America. लेकिन अभी चाइना ने डिस्क्लोज नहीं किया है सारे डिटेल्स एंड हाउ दे हैव इम्पोज्ड टैक्सेस, ऑन व्हाट आइटम्स दे हैव इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन द अमेरिकन गुड्स। अभी ये सारे डिटेल्स चाइना ने आउट नहीं किए हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए हैं जिससे दोनों ही देशों के एक्सपोर्ट्स को फर्क पड़ेगा। इट इज गोइंग टू अफेक्ट इकोनॉमी ऑफ बोथ द कंट्रीज। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वेट एंड वॉच दैट विच कंट्री इज गोइंग टू सफर मोर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन यूके विल बिकम ट्विन सिटी ऑफ अमृतसर? एंड द करेक्ट आंसर इज थेटफोर्ड इन नॉरफॉल्क which is in England in United Kingdom. It would become the twin city of Amritsar. It is hometown of Maharaja Dulip Singh, who was the last Maharaja of Sikh Empire. Maharaja Dulip Singh was the son of great ruler of Sikh Empire, Maharaja Ranjit Singh. And this town is observing his 125th death anniversary with a 2-week long Punjabi festival.
The festival would be celebrated as a partnership project between Essex Cultural Diversity Project, which is ECDP, and Thetford Town Council. It is planned as a cultural celebration and exploration of the story of Dilip Singh and his cultural legacy. You must have read in the history of India that two major battles were fought between the British Army and between Army of Punjab. After the death of Maharaja Ranjit Singh, British wanted to capture territories of Punjab. And Maharaja Ranjit Singh, after his death, was succeeded by his son Maharaja Dilip Singh. So, practically the battles were fought between Maharaja Dilip Singh and British Army. The first Anglo-Sikh battle commenced from 1844 and lasted till 1846, where Dilip Singh lost his sovereign authorities, and British got capture over most of the territories of Punjab. The second Anglo-Sikh battle was again started in 1848 and ended in 1849 with the defeat of Punjab, and Maharaja Dilip Singh was pensioned off to England. So when Maharaja Dilip Singh was sent by British to United Kingdom, he resided in Thetford in Norfolk, which is in modern day England. Where is Airports Authority of India (AAI) going to set up state-of-the-art Civil Aviation Research Organization or CARO? And इसका correct answer है Hyderabad Begumpet Airport. The foundation stone of the center was laid by Union Civil Aviation Minister Suresh Prabhu. Suresh Prabhu ने इस project को inaugurate किया है. And for this project, Airports Authority of India, they have funded about rupees 1200 crores for 12 years of research and development. Civil Aviation Research Organization or CARO will spread over 27 acres and it would cater all the needs of growing air navigation services, airports and engineering research. और ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? एंड इसका करेक्ट आंसर है 1st of July. एवरी ईयर 1st of July is celebrated as National Doctors Day. It is observed all across India to express gratitude and acknowledge the dedication and commitment of doctors towards our society. Actually, this day honors legendary physician and West Bengal के second chief minister Dr. Bidhan Chandra Roy. His birth and death anniversary coincides on the same day. And Indian Medical Association theme for 2018 National Doctors Day is Zero Tolerance to Violence Against Doctors and Clinical Establishment. आपने ऐसे कई सारे केसेस देखे होंगे जहां कई बार पेशेंट्स की डेथ हो जाने पर उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स डॉक्टर्स को दोषी मानते हैं और डॉक्टर्स के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है. इसी बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2018 में नेशनल डॉक्टर्स डे के लिए थीम रखा है जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट. चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं. हु रिसेंटली स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट to win gold medal at FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup, which was held in Mersin, Turkey. And correct answer है दीपा कर्माकर. दीपा कर्माकर ने इतिहास रचा है by becoming the first Indian gymnast to win gold medal. She got the victory after layoff of nearly 2 years due to knee injury. And she is 24 years old from Tripura, who had finished 4th in vault event, which was held in 2016 Rio Olympics, where she scored 14.15 to win the top prize. She had topped the qualification with the score of 13.4. तो ये दीपा कर्माकर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप विच वाज हेल्ड इन टर्की. आगे देखते हैं. विथ विच कंट्री इंडिया प्लान्स टू कैंसिल जेट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 2 लाख करोड़ विच वाज साइंड इन 2007. एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया. इंडिया ने रशिया के साथ 2007 में जेट प्लेन्स खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया था. बट नाउ इंडिया इज अनविलिंग टू गो अहेड विद द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA. इट इज ड्यू टू हाई कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट. And the project was stuck for last 11 years as there have been serious differences between two countries on the sharing of cost. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री NN वोहरा हैज डायरेक्टेड एनफोर्समेंट ऑफ विच एक्ट रिसेंटली? और इसका करेक्ट आंसर है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट विच इज COTPA and the act was enforced in year 2003. NN Vohra ordered administration to fully gear up for ensuring that anti-tobacco information is disseminated among the general masses in every corner of the state.
स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए गए हैं, गवर्नर ने आदेश दिए हैं कि वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को टोबैको के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। Smoking remains the second largest risk factor for early death and disability. And to further reduce the impact of the smoking, we must intensify tobacco control efforts and discourage it, ऐसा NN वोहरा ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which two state governments have shown reluctance to implement Ayushman Bharat Yojana, which is National Health Protection Scheme, which was launched by the Centre in the budget session of 2018? 2018 में बजट सेशन में फरवरी में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी ने बहुत बड़ी स्कीम हेल्थ केयर सेक्टर के लिए लॉन्च की थी अंडर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और उस स्कीम का नाम था आयुष्मान भारत योजना। हाल ही में किन दो स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मना किया है? और इसका आंसर है राजस्थान एंड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। बिकॉज राजस्थान में देयर इज ऑलरेडी वन ऑनगोइंग स्कीम विच कवर्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और उस स्कीम का नाम है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। And under this scheme, cashless healthcare services are already provided to around 4.5 crore people. Maharashtra government has also cited lack of funds as a reason for not implementing the scheme. And state already run Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana, under which 2.2 crore people are provided insurance cover up to 2 lakh rupees. राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ऑलरेडी लागू की गई है, और महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ऑलरेडी लागू की जा चुकी है। इसी वजह से ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है। इस स्कीम के तहत एनडीए गवर्नमेंट ने कहा है कि एवरी ईयर अबाउट 5 लाख रुपीज ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस कवर वुड बी गिवन टू वन फैमिली, एंड इट वुड कवर बेसिकली ऑल द फेटल डिसीजेस। राजस्थान और महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा ने भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से मना किया है, बिकॉज द स्टेट ऑल्सो रन अ स्कीम बाय द नेम ऑफ बीजो स्वास्थ्य कल्याण योजना, विच हैज मोर बेनिफिशियरीज एज कंपेयर टू आयुष्मान भारत योजना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 9 to 13 जुलाई 2018? और इसका आंसर है वैंकूवर कनाडा। वैंकूवर कनाडा में 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसे एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इनॉग्रेट किया। More than 500 scholars and delegates from around 40 countries participated in this conference, and they had a special discussion on the history and education of women in Vedic literature, Sanskrit Buddhist manuscripts, and other things of the similar kind. Next question, where was International 100 Hot Air Balloon Fiesta, which symbolized wind of freedom, was celebrated? और इसका सही जवाब है इनकॉनस, लिथुआनिया, जो कि एक बाल्टिक नेशन है। दिस इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर 100 हॉट एयर बलून्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट अ सेंचुरी ऑफ दिस बाल्टिक स्टेट इंडिपेंडेंस। 100 balloons floated into the sky over second city of Lithuania with a 100-meter long national flag attached to one of them. So recently लिथुआनिया ने अपने इंडिपेंडेंस के 100 years कंप्लीट किए, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए 100 हॉट एयर बलून फिएस्टा ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लूनर एक्लिप्स, व्हिच अदर सेलेस्टियल इवेंट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन जुलाई 2018? एंड द करेक्ट आंसर इज मार्स एट ऑपोजिशन। ऑन द इंटरवाइनिंग नाइट ऑफ 27th and 28th July, moon will be eclipsed totally. And again on 31st of July, Mars, which is fourth planet from Sun, it would be closest to Earth since it was in 2003. So 27th July को इस सदी का सबसे बड़ा लूनर एक्लिप्स दिखने वाला है, एंड अगेन 31st of July को मार्स जो है वो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट होगा। सो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल इवेंट हैं जो कि जुलाई में ऑब्जर्व किए जाएंगे। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल पीरियड इन एवरी 26 months, Earth passes between Mars and Sun, thus bringing Mars and Sun exactly opposite side of it, and this is called as Mars at opposition. देखिए, अर्थ सेंटर में है, और जब उसके एक तरफ सन हो और दूसरी तरफ मार्स एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब अर्थ सेंटर में है एंड सन एंड मार्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द अर्थ, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मार्स एट ऑपोजिशन। The next opposition of Mars would be observed on 6th of October 2020. So again जुलाई में 27 जुलाई को इस सदी का सबसे लॉन्गेस्ट लूनर एक्लिप्स देखा जाएगा, and 31st of July को Earth would be in the center of Mars and Sun.
Next question. Which book claimed the title of Best Booker Prize winner in 50 years? And the answer is The English Patient, which is written by Michael Odante. It was announced as a winner of the Golden Man Booker Prize at South Bank Centre in London. The prize was instituted as a part of celebration to mark the Bookers having completed 50 years. So 2018 में Bookers Prize के 50 years complete हो रहे हैं. The Man Booker International Prize celebrate English translation of works of international literature. In 1971, V.S. Naipaul's novel In a Free State, it was the first book by Indian novelist to win Booker's Prize. Next question. Which mobile giant unveiled world's largest mobile factory in Noida? And the correct answer is Samsung. Samsung जो कि एक साउथ कोरियन ब्रांड है, इन्होंने नोएडा में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है. And this project is expected to generate jobs and it would also make India a global export hub. So ये इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा. This new facility will give direct jobs to about 1,000 people, taking existing workforce at this plant to 6,000. And this company is expected to export about 30% of handsets which are made here to other markets. Next question. China recently launched 2 satellites for which country? And the correct answer is Pakistan. चाइना ने पाकिस्तान के लिए जो 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, they are remote sensing satellites. Satellite would help these 2 countries to monitor the progress of China-Pakistan Economic Corridor और CPEC, जिसका टोटल नेट वर्थ है अराउंड $50 billion US. और उन 2 सैटेलाइट्स के नाम है प्रेस 1 एंड पाक TES-1A. Both of them were launched from Jiuquan Satellite Launch Center, China. प्रेस 1 जो है वो चाइना का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है which was sold to Pakistan. And this press 1 would be used for land and resource surveying, for monitoring of the natural disasters and agricultural research. And also it would undertake urban construction under the One Belt and Road Initiative of Chinese government. तो आप जानते हैं चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है which is One Belt One Road Initiative of Chinese government. और इसी को मॉनिटर करने के लिए चाइना हैज सपोर्टेड पाकिस्तान एंड लॉन्च 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जिनके नाम है प्रेस 1 एंड पाकटेस 1A. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच गवर्नमेंट बॉडी डिस्क्लोज्ड द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल हेल्थ स्टैक NHS, which is a shared digital healthcare infrastructure usable by both center and state across the public and private sector? The correct answer is नीति आयोग. So ये जो नेशनल हेल्थ स्टैक है, its aim is to implement a scheme which is Ayushman Bharat Yojana, which is the healthcare sector under National Health Protection Mission of Government of India. And it would also cover other public healthcare programs in the country. It includes electronic health registries, coverage and claim platform, digital health ID cards, federated personal health records, PHR framework, and national health analytics framework. Next question. Who won Malaysian Open Badminton single title for historic 12th time? The correct answer is Lee Chong Wei, who is a Malaysian shuttler. Malaysian veteran defeated Japanese shuttler Kento Momota in a straight games in just 71 minutes. Next question. As per Brookings report, which country has replaced India to become the world's largest poor population? And the correct answer is Nigeria. With persistent decline in poverty, India is no more a nation having the largest number of poor people in the world. तो ये शायद इंडिया के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि अब वो इस दुनिया का सबसे पुअरेस्ट नेशन नहीं है, बट उसको रिप्लेस कर दिया है नाइजीरिया ने. Poverty in Nigeria is now growing by 6 people every minute while it continues to fall in India. And Democratic Republic of Congo, that is DR Congo, would take over as number 2 in terms of country having the largest number of poor population. Next question. Recently, Human Resource and Development Ministry granted IOE, that is Institute of Eminence status, to which yet to be established institute that drew a sharp criticism. जो इंस्टीट्यूट अभी एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं, उसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया है HRD मिनिस्ट्री ने, और वो इंस्टीट्यूट है जियो इंस्टीट्यूट बाय रिलायंस फाउंडेशन.
Institute of Eminence status was also granted to IIT Delhi, IIT Bombay, and Bangalore-based Indian Institute of Science in public sector. As in the private sector, it was allotted to BITS Pilani, Manipal Academy of Higher Education, and Geo Institute. Agla question. Government of India decided to ease visa norms that would allow conversion of tourist visa to dependent visa for spouse of Indian nationals which are getting married abroad. Which countries are excluded from this facility? So recently government of India ने visa norms को बहुत ही ज़्यादा easy करने के लिए एक permission दी है जिसमें Indian citizen का husband या wife यदि उनकी शादी इंडिया से बाहर होती है उसे भी वो डिपेंडेंट वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कुछ कंट्रीज को इस फैसिलिटी से बाहर किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, और वो कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान एंड इराक. Irrespective of the place of wedding, foreign spouse of Indian citizen can convert their tourist visa to dependent visa. The last male rhinoceros of which species died recently, leaving only 2 females as the remaining member of the world's most endangered subspecies of mammal. और करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसोरस. सो नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसोरस का लास्ट सर्वाइविंग मेल, उसकी रिसेंटली डेथ हो गई है और अब इस स्पीशीज के केवल 2 फीमेल्स बचे हुए हैं जिनके नाम है नजन एंड फाटू, और जो इस समय एक केनिया में कंजर्वेंसी में रह रहे हैं. So Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Berlin and Avantia Biotechnology firm which is in Italy, they have planned to keep the species alive through IVF. IVF का मतलब है in vitro fertilization. So लैब में प्रोसेसिंग करके वो स्पीशीज को सर्वाइव रखना चाहते हैं by cross mating. Next question. What will be the venue of US and Russia summit that is going to be held on 16th of July 2018? यूएसए और रशिया के बीच में जो समिट होने वाला है उसका वेन्यू है हेलसिंकी विच इज कैपिटल ऑफ फिनलैंड. Extension of New START nuclear treaty which expires in 2021, it would be possibly discussed during the meeting of President of Russia Vladimir Putin and President of USA Donald Trump. ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, START stands for Strategic Arms Reduction Treaty. And the treaty came into force in Feb 2011 that allow Washington and Moscow to keep tab on each other's nuclear programs. So Strategic Arms Reduction Treaty के तहत रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ट्रीटीज जल्द ही एक्सपायर होने वाली है 2021 में. So both the leaders could possibly discuss about the extension of the treaty. They may also discuss on the sanctions relief as USA has imposed restrictions on Moscow, which is Russian capital, over annexation of Ukraine's Crimea region. रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसके चलते अमेरिका ने कई सारे रशियन प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कई सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं. Which new draft proposed by the government it would make crime investigations easier using DNA technology. और इस न्यू बिल के नाम है DNA Technology Use and Application Bill of 2018. This technology would be used to establish identity of a person, including the victim, suspect, offenders, missing person and deceased. इस बिल के तहत 2 मेन बॉडी बनाने का टारगेट है. पहला DNA रेगुलेटरी बोर्ड. ये एक ऐसा बोर्ड होगा that would certify the labs that would be authorized to carry the DNA testing, and it would also approve the DNA data banks and then monitor the function of DNA labs and DNA data bank. इसका मतलब DNA रेगुलेटरी बोर्ड एक ऐसा रेगुलेटरी बॉडी होगा जो कि लैब्स को ऑथराइज करेगा ताकि वो DNA टेस्टिंग कर सकें, और DNA डेटा बैंक्स जहां पे DNA प्रोफाइल को स्टोर करके रखा जाएगा उसे मॉनिटर कर पाए. The Secretary of the Department of Biotechnology would be the ex officio chairman of this DNA regulatory board. जैसा कि मैंने कहा, DNA डेटा बैंक it would be a national and regional level data bank and it would store the DNA profiles as received from the DNA labs in a specified format. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which 2 members of British Parliament resigned recently in protest over the plans of Prime Minister Theresa May with regard to Brexit. तो ये ब्रेक्जिट क्या है? ब्रेक्जिट एक टर्म है जो कि मीडिया ने पॉपुलर किया है, जो रेफर करता है ब्रिटेन के एग्जिट को फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है
2016 में उन्होंने वोट किया है कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं। इसे ब्रेक्जिट कहा गया है। अब प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे की ब्रेक्जिट को लेकर अलग फिलॉसफी है और वहीं उनके कुछ मिनिस्टर्स की दूसरी फिलॉसफी है। सो इसी के चलते डेविड डेविस जो कि ब्रेक्जिट सेक्रेटरी रहे और बोरिस जॉनसन जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन के, उन्होंने रिजाइन किया है। Now leadership of Theresa May could be challenged if 15% of the MP in Theresa May's Conservative Party they write a letter to the chairman of the party जिसे कहा जाता है 1922 कमेटी। फिलहाल थेरेसा मे की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें कुल मिलाकर 316 MP हैं, 316 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यदि इसमें से 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक लेटर लिख कर देते हैं टू द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी को कहा जाता है 1922 कमेटी, तो फिर थेरेसा मे की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसे चैलेंज किया जा सकता है। Now there are different ideologies regarding the Brexit. It is not easy for any country to just withdraw from the membership of European Union. There are certain provisions, certain guidelines which a country is expected to follow, and the procedure is very gradual. It is very slow. It is going to take some time. प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे जो हैं वो सॉफ्ट ब्रेक्जिट का फेवर करती हैं। शी डू नॉट फेवर कंप्लीट कट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, whereas the members who have resigned recently, David Davis and Boris Johnson, they want hard Brexit. They want complete break from European Union. Next question देखते हैं, which country emerged as world's sixth largest economy, surpassing France as per the data released by World Bank for 2017? किस कंट्री ने फ्रांस को पीछे करते हुए दुनिया की सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग हासिल किया है? एंड द आंसर इज इंडिया। राइट नाउ जीडीपी फॉर इंडिया विच इज नॉमिनल जीडीपी, इट इज 2.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स which has defeated France with the economy of 2.58 ट्रिलियन डॉलर। अगर हम कंट्रीज की लिस्ट की बात करें तो यूएसए इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी which is at 19.39 trillion, followed by China at number 2, which is 12.23 trillion dollars. Third position is of Japan, 4.87. Fourth position Germany, which is 3.67. Fifth position is UK, Great Britain, which is 2.62. Followed by India, जो कि अब 6th position पर है, then France, जो कि 7th है, and other 3 countries in top 10 are Brazil, Italy and Canada. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ डील विथ नेपाल टू डेवलप विच रेल प्रोजेक्ट, और उस रेल प्रोजेक्ट का नाम है रक्सौल काठमांडू रेल प्रोजेक्ट। सो द रेल लिंक वुड कनेक्ट रक्सौल विच इज इन बिहार टू नेपालीज काठमांडू, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया इज ऑलरेडी बिल्डिंग 5 क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। One line which is between these two nations, which is Jayanagar to Janakpur, it will be completed within 1 year. Next question, which state government has decided to promote mechanized farming to encourage farmers to take up paddy cultivation on a fallow land? तो सबसे पहले तो fallow land क्या होता है? एक ऐसा land होता है जिसे कोई farmer 1 या 1.5 year के लिए छोड़ देता है without cultivating any crops, ताकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन की जा सके। सो ऐसा लैंड जिसपे साल 1.5 साल कोई कल्टीवेशन नहीं होता है उसे फैलो लैंड कहा जाता है। एंड यूजुअली इस तरह के लैंड्स जिन्हें छोड़ दिया जाता है उनमें काफी सारे वीड्स उग जाते हैं। सो गोवा की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो फैलो लैंड को यूज करें और मशीनरी को यूज करते हुए उसमें राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अबाउट 30,000 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड इन गोवा इज अंडर पैडी कल्टीवेशन। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, वो जो कि नागपुर में एक बॉडी है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि देयर इज अबाउट 30,400 हेक्टेयर्स ऑफ फैलो लैंड इन गोवा एंड 35% ऑफ दिस फैलो लैंड इट कैन बी ब्रॉट अंडर पैडी कल्टीवेशन बाय डीवीडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी लंबे समय से लैंड का कल्टीवेशन में यूज ना होने की वजह से उसमें अनवांटेड वीड्स या अनवांटेड ट्रीज उग सकते हैं। उसे हटाकर उस फैलो लैंड को मशीनरी के थ्रू वापस पैडी कल्टीवेशन के लिए रीयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बाय वर्ल्ड बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP? एंड करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। एज पर द लेटेस्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP इंडेक्स, Telangana and Haryana they are placed on 2nd and 3rd position.
तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान एक तरह से गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको फॉलो करते हुए हर स्टेट को अपना बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना होता है। तो इस साल आंध्र प्रदेश स्टूड एट नंबर 1 और सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है तेलंगाना और हरियाणा। इसके साथ ही मेघालय, लक्षद्वीप एंड अरुणाचल प्रदेश दे वर रैंक्ड एट द बॉटम। और दिल्ली की बात करें तो इट स्टूड एट 23rd पोजीशन। And DIPP, which is Department of Industrial Policy and Promotion, it works under Ministry of Commerce and Industry. Next question, which two Indian origin women they have been named on Forbes list of America's richest self-made women? And the correct answer is technology executives Jayashree Ulal and Neerja Sethi. Both of these females, they made it to Forbes list of 60 richest self-made women, where Jayashree Ulal is ranked at 18th position, Neerja Sethi was ranked at 21st. Along with this, reality TV star Kylie Jenner is youngest to be featured in the list. Next question, which edition of Rath Yatra or Chariot Festival of Ahmedabad, it will be celebrated on a grand scale in July, with series of Akhada Parishad taking part for the first time? Correct answer is 141st edition. अहमदाबाद का जो रथ यात्रा है, जिसे चैरियट फेस्टिवल बोला जाता है, ये बहुत ही ग्रैंड चैरियट फेस्टिवल है, बहुत ही ग्रैंड रथ यात्रा है, जिसे दुनिया में 3rd लार्जेस्ट का स्टेटस मिला हुआ है। एंड प्रोसेशन विल बी टेकन आउट फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल विच इज इन जमालपुर एरिया ऑफ अहमदाबाद, विद चैरियट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, हिज ब्रदर बलराम एंड सिस्टर सुभद्रा। पहली बार इस रथ यात्रा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट Mahant Narendra Giri would participate. Next question, which typhoon battered Taiwan and prompted more than 3,000 people to be moved to shelters before hitting China? And the correct answer is Typhoon Maria. As per the Government Disaster Response Center, total about 3,430 people were evacuated from their homes to avoid the landslides due to heavy rainfall. और इस टाइफून मारिया की विंड स्पीड पहुंची लगभग 191 किलोमीटर पर आवर। Typhoons form as a tropical depression and they gather their strength from warm waters of Pacific Ocean or South China Sea. Which data protection watchdog in UK? It has slapped a fine on Facebook of £500,000, which is approximately $662,500 over Cambridge Analytica data leak scandal. And the name of that watchdog is Information Commissioner's Office, ICO. तो ब्रिटेन के आईसीओ ने फेसबुक को फाइन लगाया है £500,000 का, बिकॉज फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम के ऐप के साथ मिलकर यूजर डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया। फेसबुक ब्रोक ब्रिटिश लॉ बाय फेलिंग टू सेफगार्ड पीपल्स इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो नॉट रिवीलिंग हाउ पीपल्स डेटा वॉज हार्वेस्टेड बाय अदर्स। So along with Cambridge Analytica, Facebook was also investigated as there is evidence that app has been used to harvest the data of 87 million Facebook users. और ये जो फाइन लगाया है £500,000 का, it is the highest permitted fine under Britain's data protection law. Next question, which government body approved net neutrality rules in India? And the correct answer is Telecom Commission of India. Net neutrality का मतलब क्या होता है? Net neutrality, it bars the service providers from discriminating against internet content and services by blocking, throttling or granting them higher speed access. Different service providers हैं, जैसे हम इंडिया में बात करें तो एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया। सो ये सर्विस प्रोवाइडर्स कई सारे इंटरनेट पे कंटेंट का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? अलग अलग स्पीड ग्रांट करते हैं, किसी को ब्लॉक कर देते हैं। सो सभी तरह के इंफॉर्मेशन को, सभी तरह के कंटेंट को बराबरी का ट्रीटमेंट मिले, इसे कहा जाता है नेट न्यूट्रलिटी। इवन द ट्राई विच इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट हैज ऑलरेडी प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ द कंटेंट। National Digital Communication Policy, which is NDCP of 2018, it aims to attract about $100 billion or about 6.5 lakh crore in investment, and it is going to generate 40 lakh new jobs. Next question, according to the Pew Research Center survey, which American president was voted by majority as the best president in their lifetime? And correct answer is former US President Barack Obama. बराक ओबामा को 44% अमेरिकन पॉपुलेशन ने बेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट चुना है। He served 2 terms as US president and was chosen by about 44%.
एंड सेकेंड पोजीशन वाज अचीव बाय बिल क्लिंटन, 33% लोगों ने उन्हें चुना है। एंड देन थर्ड पोजीशन वाज रोनाल्ड रेगन, जिन्हें 32% वोटर्स ने चुना है। और इस सर्वे ने करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फोर्थ पोजीशन पर प्लेस किया है। द प्यू रिसर्च सेंटर इज अ नॉन पार्टिसन अमेरिकन फैक्ट टैंक which is based in Washington DC, और इसका काम क्या है? It provide information on the social issues, public opinion and demographic trends shaping US and the world. Recently, central government has left to Supreme Court to test the constitutional validity of which section of IPC, Indian Penal Code, which criminalize consensual acts of adults in private. और इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 377 ऑफ IPC. Section 377 refers to unnatural offences and it invite the punishment of imprisonment for life or maybe term of 10 years and also liable to pay a fine. However, the issues like gay marriages, adoption, ancillary civil rights of LGBTQ, it should not be dealt by it as per the government. LGBTQ stand for lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है यदि हम गे मैरिजेस को या अननेचुरल सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दें तो सोसाइटी का नजरिया LGBTQ कम्युनिटी की तरफ बदल जाएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है हाउ दे आर गोइंग टू अमेंड सेक्शन 377 ऑफ IPC.